यू नो कभी कभी मैं बैठे बैठे ऐसे ही सोचता हूँ कि पानी 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 के ऊपर फ्यूचर की जंगें हैं। जबकि वर्ल्ड इज़ 95% ओशन वाटर, फिर भी पानी के ऊपर जंगें होने वाली हैं। गोल्ड के ऊपर नहीं, तेल के ऊपर नहीं, पानी के ऊपर। दैट्स द सैड पार्ट। दैट्स द वेरी सैड पार्ट। पानी ह्यूमन राइट है, ह्यूमन नेसेसिटी है। आप भूखे रह सकते हैं मगर प्यासे आप मर जाएंगे, ह्यूमन बॉडी मर जाएगी। एंड ये सब क्यों हो रहा है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कंट्रोल्स बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी लाइक वाटर। अब तक आप समझ गए होंगे आज की कॉन्वर्सेशन कहाँ जाने वाली है। वेलकम पाकिस्तान, वेलकम टू मोटिवेशन, जहाँ पे आपकी सक्सेस जर्नी हमारा मिशन है। एंड आज हम बात करेंगे पहलगाम इंसिडेंट कश्मीर के बारे में, फैक्ट्स के साथ उसके बारे में बात करेंगे, filtering out the noise and really going deep into what happened, why it's happening, and what it's leading to. And it's all political based. And इसके अंदर you, me, आम जनता सफ़र करेगी. So let's get into it, starting with a chronological timeline order of what happened in Belgaum, Kashmir. Okay, मैंने सारी नॉइज़ को फ़िल्टर आउट करते हुए जानबूझ के डिले की है ये वीडियो एंड फॉरेन रिएक्शनरी एंड मेरा ओपिनियन वीडियो नहीं बनाई है. आई वांटेड टू वेट फॉर ऑल द नॉइज़, ऑल द इंफॉर्मेशन टू जस्ट कम आउट देयर. चारों तरफ से इंफॉर्मेशन लेकर फ़िल्टर आउट कर कर एक्चुअली में फैक्ट ड्रिवन टाइमलाइन बनाई है मैंने. सो लेट्स गेट इनटू इट. April 22, 2025, the attack. Location, Barisan Valley near Palgam, Jammu and Kashmir, India. Event क्या था? 5 militants armed with AK-47s and M4s attacked a group of tourists. Casualties, 26 people killed. 25 locals and one local घोड़ा pony operator, बेचारा गरीब आदमी जो अपनी घोड़ी के ऊपर लोगों को राइड्स कराता था to make a living. He also died. और कम से कम 20 लोग इस वक्त घायल हैं. That's on April 22nd. Now details क्या है? Allegedly, the attackers asked victims their religion before shooting them. We're back at it. Religion wars fueled by political agendas. एक टूरिस्ट जो जिप लाइन कर रहा था was recording this event transpired, जिसकी वीडियोस आई हैं. It's out there. I've seen it. मैं अमेरिका में रहता हूँ तो ये वीडियोस ज़्यादा easily अवेलेबल हैं देखने के लिए. I don't know ये वीडियोस अगर पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं, मगर मैंने देखी है. So take it with that. I've seen it. This happening from a bird's eye view. It sucks. It's terrible. So ये हुआ था April 22nd को. April 23rd को immediate response क्या था? Local residents and pony operators assisted in evacuating the injured, or the 20 people. Government ने क्या actions किए? PM of India Narendra Modi was on a foreign trip. He cut that short and flew back to India immediately. जैसे ही उसके कान तक ये खबरें आई, एक helpline India ने establish किया to help the affected people of Pahalgam, Jammu and Kashmir. Security law forces were tasked and launched a manhunt for the killers. April 24th, 2 दिन बाद, India suspends the Indus Water Treaty with Pakistan, जिसके साथ हमने पानी की आज की वीडियो शुरू की थी. एंड कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान के पानी का इशू आया है. राइट हियर, सस्पेंड्स द इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान ऑन April 24th. हम थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी एग्जैक्टली है क्या later in the video, so stay tuned. Closed the main crossing border with Pakistan, Wagah border. Expelled Pakistani diplomats. Pakistan ने इसके रिटर्न में क्या किया? Pakistan, from a country state government level, denied any involvement in the attacks. Pakistan ने अपनी air space Indian aircraft के लिए shut down कर दी. So all flights going over Pakistan into India have to now divert around Pakistan
causing India and Indian Airlines hundreds of millions of dollars. April 25 to 26 क्या हुआ? Investigations and tensions. Indian authorities की क्या investigation है? Indian authorities identified suspects. A bounty was announced for information leading to their capture, obviously. Regional tensions. Now, regional tensions में fact ये है कि cross-border firing report की गई है at the line of control. Noise क्या है? पाकिस्तान ने पहले फायरिंग की है, इंडिया ने रिटर्न की है, इंडिया ने पहले फायरिंग की है, पाकिस्तान ने रिटर्न की है. ये नॉइज है. किसने किया, क्यों किया, कब किया, पहले कौन था? फैक्ट, it has happened. Across the LOC, firing हुई है. That's a fact. And that's what we're focused on today. United Nations calls for restraint for both India and Pakistan. China ने पाकिस्तान को बैक किया है, rightfully so. China पाकिस्तान में heavily invested है. Pakistan के rare earth minerals China चाहता है, so China has backed Pakistan for obvious reasons. April 27 to 28, public relations and security measures. Public sentiment क्या है इंडिया में? Protest held across India in memory of the victims, rightfully so. Innocent people, tourists, बच्चे, घोड़े ऑपरेट करने वाले, जो हमारे कराची में हम बोट बेसिन जाते हैं तो घोड़े और कैमल वाले लोग होते हैं जो कुछ 100 रुपीज़ के लिए अपने उसके ऊपर आपको बिठाते हैं कि आप एंजॉय कर सकें. उस टाइप के लोग मारे गए, राइट? लाइक दैट्स जस्ट सैड डूड. गरीब लोग ट्राइंग टू मेक अ अर्नेस्ट ऑनेस्ट लिविंग. Reports of increased scrutiny and harassment of Kashmiri residents in other parts of India. Security measures. Indian authorities closed 48 of 87 tourist sites in Kashmir to ensure safety. क्या हुआ इससे at the end of the day? आम जनता जिनका किसी चीज़ से कोई लेना देनी है, आपके मेरे जैसे अपनी फैमिली के साथ वेकेशन के लिए पहाड़ी इलाका कश्मीर वगैरह में जाके थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं, they can't. People are affected, scared for their lives. April 29th, जो कि आज है. Current status क्या है? Ongoing manhunt for the attackers, increased military presence in the region, significant decline in tourist arrivals in Jammu and Kashmir, economic impact on local businesses. So ये थी पहलगाम की chronological order from April 22nd, जिस दिन अटैक हुआ से लेके अब तक. अटैक के बाद इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, इंडिया क्या कर रहा है. एंड दोनों साइड्स ऑफ द LOC पे जवान खड़े हुए हैं इस वक्त एक दूसरे को मार मिटने के लिए देश के नाम पे. लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ. पीपल आर रेडी एंड इट सक्स. तो अब हम आते हैं पानी के टॉपिक पे, जो कि आज का मेन टॉपिक भी है. पहलगाम में ये सब होने के बाद, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी. सदियों से ये वाटर ट्रीटी इज़ बिन इन प्लेस सिंस द 1960s, जब वर्ल्ड बैंक हैड टू गेट इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग दिस ट्रीटी पुट इन प्लेस. इंडस वाटर रिवर के 6 बैंक्स हैं, जो 3 इंडिया में आते हैं, 3 पाकिस्तान में आते हैं. झेलम, पंजाब, ऊपर से लेके नीचे तक, ऑल द वे डाउन टू सिंध. यही पानी जो इंडिया से आता है, उसी पे पाकिस्तान सर्वाइव करता है. 80% ऑफ द इंडस रिवर का पानी पाकिस्तान में आता है, 20% इंडिया में जाता है. इंडिया ऑब्वियसली इज़ अ मच बिगर कंट्री. इंडिया में और भी ज़्यादा रिवर बैंक्स हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर ओनली ये रिवर बैंक है. इंडिया ने ट्रीटी सस्पेंड कर दी है, जैसे कि हमको पता है. एंड इस वक्त the lifeblood of millions and millions and millions of Pakistanis hangs by political threads. Imagine, इसको break down करें. Millions and करोड़ों लोगों की well-being on water and survival hangs by political threads. पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आपस में लड़ लुड़ के गवर्नमेंट लेवल पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं. इसका इफेक्ट किसको मिल रहा है? हम जैसे आम लोग सफ़र करेंगे विद द शॉर्टेज ऑफ पाकिस्तान, शॉर्टेज ऑफ वाटर इन पाकिस्तान. नाउ इन दिस वाटर ट्रीटी क्या है, ये समझना थोड़ी ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाई द सस्पेंशन ऑफ दिस ट्रीटी इज सो सिग्निफिकेंट एंड इतनी बिग डील क्यों है. इन दिस वाटर ट्रीटी क्या है उसके बारे में बात करते हैं.
मैंने पूरी एनालिसिस के साथ, पूरी रिसर्च के साथ, गोइंग ऑल द वे बैक टू 1947 अप टू द 1960 एंड किस तरह से ये ट्रीटी आई थी टू लाइफ. क्विक स्टोरी. 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद इंडिया एंड पाकिस्तान को दोनों को पानी की ज़रूरत थी सख्त. द इंडस रिवर सिस्टम विच इंक्लूड्स द इंडस एंड 5 अदर रिवर्स, 6 बैंक्स की बात हुई थी, ran between both countries. Tension started immediately partition के बाद. 1948 में ही पाकिस्तान इंडिया की पहली जंग हुई थी. पानी कौन कंट्रोल करेगा? To prevent wars, the World Bank stepped in and helped India and Pakistan sign a deal in 1960 called the Indus Water Treaty. What does the treaty say? There are 6 rivers in total, 3 eastern rivers, Ravi, Beas, and Sultaj, given to India to control and use. 3 western rivers, Indus, Jhelum, or Chenab, given to Pakistan to control and use. India can use the western rivers, but only for limited activities like drinking, farming, and small-scale hydro projects. India cannot block, divert, or diminish their flow unfairly. Pakistan, in return, gets the guarantee that these western rivers will keep flowing to their needs of Pakistan. क्यों है ये इम्पोर्टेंट? इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, 6 रिवर्स हैं, 3 इंडिया कंट्रोल कर रहा है, 3 पाकिस्तान को इशू किए हुए. आरा फ्लो इंडिया से डाउनवर्ड्स है इनटू पाकिस्तान. सो इवन जो 3 पाकिस्तान को अलॉट हुए हुए ट्रीटी के अंदर, 80% of that water comes into Pakistan from those 3 banks, but it is released by India. India controls the water. The dam's there, the technology is there, they are a more established country. Unfortunately, they control our water. It is what it is. ये ट्रीटी क्यों इम्पोर्टेंट है? ये ट्रीटी की वजह से पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएट हुआ था पानी के ऊपर. इवन व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉट वॉर्स, 65, 71, Kargil, 99, the treaty stayed intact. इंडिया पाकिस्तान की जब भी जंग हुई है, इस जंग के दौरान ये ट्रीटी पे कभी अफेक्ट नहीं आया है जिससे पाकिस्तान में पानी आता है. मगर दिस टाइम हुआ है 2025 April. This treaty is genuinely called the most successful water sharing treaty in the world because it has survived so many decades and because it has survived so many wars. How does it relate to April 25, the Pahalgam incident जिसकी हम बात कर रहे हैं? Right? आप और मेरे जैसे लोग जो सिर्फ अच्छा काम करना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज को रेज करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, अच्छे से जीना चाहते हैं, we're affected. But it is what it is. We have to accept this unfortunate reality. तो अब हम समझ गए हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, कैसे फंक्शन करती है, इसका मकसद क्या है. तो पाकिस्तान के अंदर इंडस वाटर फ्लो का क्या सिस्टम है? आफ्टर एंटरिंग पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, द इंडस रिवर फ्लोज फर्स्ट थ्रू पंजाब, then into Sindh, and then finally out to the Arabian Sea. Sindh is the lowest lying province, meaning it's the last in line to get water. Historically, stats factual, पंजाब हमेशा से politically more powerful रहा है सिंध से, and सिंध हमेशा इसी fear में रहा है कि पंजाब too much water consume ना कर लेवे, leaving less for Sindh. But guess what? Indus Water Treaty क्यों इतनी big deal है? Let's talk about the hidden fight. Punjab versus Sindh. Internal fight for water of Pakistan through the Indus River. मज़ा आएगा.